ओ हिक ठोक के कहीदा सरदार बंदियां हिक ठिक ठोक के कहीदा सरदार बंदियां. Ever wondered how we get ready? How much time we take? What's the whole process? How do we tie a turban, our hairs, our beard? If you ever wanted to know it, stay tuned. Because in this video, I'm gonna show you guys how we go from this to that. Okay, so let's get started. So there are basically 3 steps. So first of all we do our hairs, second we do the beard, and third we do the turban. अब for hairs, बालों के लिए जो भी जितने भी सीखे हैं वो यूज़ करते हैं लकड़ी का कंघा, और जितने भी अमृतधारी सीखे हैं वो इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं. और ये सीखों के जो 5 कंघा हैं उनमें से एक है कंघा, तो वो इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, जेब में या बैग में नहीं, हमेशा अपने सिर पे. लेट मी शो यू. फटका बांधते हैं, ये इसलिए बांधते हैं ताकि हमारी टर्बन सेट रहे और हिले ना. इसको कहते हैं 50. ये हम इसलिए बांधते हैं ताकि जो भी हमारी टर्बन का कलर है उसके साथ इसको मैच करे. Done with the hairs. Now the second step is beard. अब कुछ होते हैं जो अपनी beard को खुली रखते हैं, बांधते नहीं, but मैं बांधता हूँ, so I'm gonna show you how I tie my beard. अब दाढ़ी बांधने के लिए भी हम मार्केट में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, स्प्रेज भी आती हैं, जेल्स भी आती हैं और फिक्सर भी आती है. So but I still use the good old fixer. सेट करने के लिए ये है ठाठी. ये हम इसलिए बांधते हैं ताकि दाढ़ी सेट रहे, सूखने तक एकदम परफेक्ट हो जाए. My beard. Now it's time for the mustaches. मूंछों की बारी आ गई. उसके लिए भी मैं फिक्सर ही यूज़ करता हूँ. अगेन उसके लिए भी कोई वैक्स यूज़ करता है, कोई जेल यूज़ करता है, बट आई यूज़ फिक्सर. Okay, so now we're done with the beard. Now it's time for the third and final step, the turban. Again, turban भी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग बंदे अलग अलग टाइप की पहनते हैं. जैसे ये आ गया परना, इसको बांधने के लिए लाइक 1 से 1.5 मिनट चाहिए. अब ये आ गया तो माला, ये भी ऑलमोस्ट आपका 10 to 12 मिनट्स लेता है बांधने के लिए, बट आई एम स्टिकिंग विद द रेगुलर टर्बन. सो now this whole process takes us around 10 to 15 minutes hardly. So now you know what takes us to get ready. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. Sat Shri Akal.